Overview of global commitments on human rights. In this module, we will go through some of the global commitments that have been made pertaining to human rights and women's rights. Vienna Declaration and Program of Action. The World Conference on Human Rights, held in 1993 in Vienna, reviewed the status of human rights machinery in place at that time. And the conference adopted the Vienna Declaration and Program of Action. According to this, quote, "The human rights of women and of the girl child are an inalienable, integral, and indivisible part of universal human rights. Eliminating all forms of gender-based violence was strongly emphasized." So we see that once again the rights of women and girl child have been talked about. Women's rights are human rights. It became a popular slogan after that. Women's rights and civil society activists campaigned for having women's rights and violation of these rights on the international community agenda. हम देखते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ ममालिक में औरतों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों ने, मर्दों ख़वातीन ने, जो चाहते थे कि औरतों और मर्दों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, मर्दों और औरतों के हकूक़ बराबर हों और कहीं ऐसा ना हो कि किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन या तफरीक हो औरतों के हकूक़ के हवाले से। तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपने अपने तौर पर इज्तिमाई सतह पर भी और इनफरादी सतह पर भी इस सिलसिले में काम किया और बहुत सी नई डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई। International Conference on Population and Development. That was a milestone and big event. In 1994, the International Conference on Population and Development was held in Cairo, Egypt. Although the conference focused on population, it contributed a lot toward women's rights. The population conference was basically, as we understand, about population. आबादी से मुतल्लिक ये कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें की गई जिनमें ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बार बार जिक्र हुआ. The conference's program of action took up issues which were primarily related to women's rights. So many things that which were being talked about in reference to population, they were also applicable to women's rights and their protection. These issues included that they talked about gender equality, the family, women's health, reproductive health, birth control, and family planning. It also covered immigration and education of women. हम देख सकते हैं कि वो ये तमाम मौज़ूआत जो हैं आबादी के मामले में कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन हम देखते हैं इन सब का अपना अपना एक हिस्सा है और एक बहुत नुमाया ताल्लुक़ है तालीम और आबादी के हवाले से, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग के हवाले से. So a number of issues that they talked about were actually pertaining to women's basic rights also. It set specific targets in the following areas. उन्होंने कुछ ऐसे टारगेट्स थे वो जो सेट किए जिनका हसूल उनका मकसद था. What did they include? Provision of universal education, reduction of infant, child and maternal mortality, and ensuring universal access to reproductive health care, including family planning, assisted childbirth, and prevention of sexually transmitted infections, including HIV/AIDS by 2015. Another milestone event, and actually a true milestone event, was the Beijing Declaration and Platform for Action. We know that the 4th World Conference on Women was held in September 1995 in Beijing, China. The Beijing Declaration and Platform for Action was adopted in this conference, and this was a landmark achievement in reference to women's rights. We also see that another effort in this regard has been the Millennium Development Goals, or the MDGs. The international community in year 2000 agreed to 8 goals, 8 time-bound goals
to be achieved by 2015. Gender equality and the empowerment of women was one of the goals. So out of the 8 goals for the world to be attained by 2015, one was about women empowerment and gender equality. It also talked about improving maternal health or reduction in maternal mortality, which was another goal. So we see that at least 2 goals were connected with women and women's rights and women empowerment and well-being of women. The international community tried hard to meet these targets. Although success was achieved in many ways in many regions of the world, but we still see that in many parts of the world we were not able to attain the ideal targets. तो हमने बहुत देखा कि मुख्तलिफ ममालिक में कोशिश की गई दुनिया भर में कि गोल जो हैं इनको 2015 तक हासिल कर लिया जाए, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं पर इसकी रफ्तार तेज़ थी और कहीं पर सुस्त, कहीं पर लोग जो हैं या ममालिक जो हैं थोड़ा सा पीछे रह गए अपने गोल्स को हासिल करने में, और कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक जो पहले से ही तरक्की याफ्ता थे उन्होंने बहुत हद तक इन अहदाफ को हासिल कर लिया. It was attended by heads of states and government, and political commitment to sustainable development was renewed. So it was said that the participants agreed to establish a set of sustainable development goals to be attained by all. A high-level political forum on sustainable development was established, and the outcome document was published under the title The Future We Want. तो हम देखते हैं कि किसी भी वक्त दुनिया में कोई भी ऐसे फोरम नहीं थे जिन्होंने इस चीज़ को भुला दिया कि हमें हकूक़ की बात करनी है, इंसानों की तरक्की की बात करनी है. किसी ना किसी लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ हर वक्त होता रहा. और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी तस्करा आ गया, और जिसमें फिर से एक दफ़ा इंसानी हकूक़ और औरतों के हकूक़ की बात भी सामने आई. It reaffirms the commitment of states to women's equal rights. Women's equal rights, access and opportunities of participation and leadership in the economy, society and political decision making. So we see that we are talking about women's contribution and their participation in the political arena, in the cultural, educational and social fields. They had to be given their rights and they have to be active participants and contributors. It emphasizes the acceleration in the implementation of commitments in the CEDAW, the Beijing Platform of Action and the Millennium Declaration. तो एक दफ़ा से फिर इस बात का इआदा किया गया कि हमने पहले से जिन मुआहदों में जिन चीज़ों का जिक्र किया था, मसलन बीजिंग डिक्लेरेशन के अंदर या सीडॉ के अंदर जो एक बड़ा डॉक्यूमेंट था, और इसके साथ साथ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में, तो हमें उन सब को दोबारा से देखना है कि क्या हमने उनको इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, और अगर हमने नहीं किया तो हमें उनको दोबारा से इम्प्लीमेंट करना है, उनको लागू करना है अपने अपने रीजन में, अपने अपने मुल्क में. It is also stated in this the outcome document that gender equality and the effective participation of women are important in the for the effective action on all aspects of sustainable development. यानी अगर हम ऐसी डेवलपमेंट चाहते हैं जो देर तक रहे, कायम रहे, मजबूत हो, तो उसमें हमें ये भुलाना नहीं चाहिए कि जेंडर इक्वलिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और औरतों के और बच्चियों को उनके हकूक़ देना भी बहुत ज़रूरी है. और इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि हमें अगर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन पाई जा रही है किसी भी सतह के ऊपर, तो इस डिस्क्रिमिनेशन को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है. हमें एक साइड पर तो हमें यह है कि हम ख़वातीन को उनके हकूक़ दें, और दूसरी जानिब अगर हम कोई तफरीकी सलूक कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन खड़ी कर रहे हैं मर्दों ख़वातीन के मामले में या किसी मुआशी वजह से भी, तो हमें उस डिस्क्रिमिनेशन का भी ख़ात्मा करना है. तो अगर इन तमाम कमिटमेंट्स को अगर हम देखें जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर हुई हैं, अगर इन सब के सब को हम इम्प्लीमेंट कर लें, इनका नफाज कर दें, तो हम सोच सकते हैं कि सूरत हाल कितनी अच्छी हो सकती है. उसके लिए ज़ाहिर है सबको कोशिश करने की ज़रूरत है.